Hi guys, you are watching Digital Maths lecture with SP. We are learning class 4 multiplication part 2. This is the lecture number 5. In previous lecture we have solved question number 1 and 2. In this lecture we have solved question number 3. Solve the problem given below. उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर करो तुम्हारे फ्रेंड के साथ. So first example is find out the total cost of 3 shirt coating rupees 95 each. इसका पहले हमें ये वर्ड प्रॉब्लम है उसका हमें मीनिंग समझना पड़ेगा. हमें क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट निकालनी है. किसके निकालनी है टोटल कॉस्ट? इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है 3 शर्ट्स. ईच शर्ट मतलब एक शर्ट कितने रुपीज का है? 495. ईच शर्ट इज 495 रुपीज. सो यार मल्टीप्लाई 495 मल्टीप्लाई 3. सो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी. Solution is 495 multiplied by 3. First we are multiply 3 multiply 5. 3 multiply 5. That is 5 3 is 15. 5 3 is 15. And 1 carry over the 1 carry over the 1 carry over the 10. Then 3 9 is 9 3 is or 9 3 is 27. 27 plus 1 28. So 8 place here and 2 carry over the 100. Then 3 4 is 3 4 is 3 4 is 12. 12 plus 2 40. So our answer is 1485. So the total cost of the three shirt are 1485 rupees. Next question is a question number 2. Amina Bai brought 6 crates of apple, each costing 325. How much did she pay together? हमें क्या निकालना है? She paid together. कितना खर्च उसने किया है? कितने एप्पल लिए गए? 6 क्रेट्स ऑफ एप्पल लिए. कॉस्टिंग कितना है? 325. तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 325 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. चलिए सॉल्यूशन. पहले कॉस्ट लिखेंगे. कितने देखो? 325. देन 6 crate of apple, so we multiply 6. 6 5 are, first we multiply 6 to 5. 6 5 are 30. 6 5 are 30. So 0 place here and 3 over the 10. Then 6 2 are 6 2 are 12. 12 plus 3, 12 plus 3 15. So 5 place below the 10 and 1 carry over the 100. Then 6 3 are 6 3 are 18. 18 plus 1, that is 19. That is 19. So our answer is 1950. So Amina Bai play altogether rupees 1950. I think you understand how to solve word problem. This is the question number 3. You can solve with me. In a mango grove, there are 25 rows with 35 trees. In each row, how many mango trees are there in a grove? एक खेती है. खेत में कितने लगाए हैं? क्या लगाए? मैंगो लगाए. करेक्ट. सो कितने रो है? 45 रो. और कितनी ट्रीज है? एक रो में कितनी ट्रीज है? 32. 45 रोज है और ट्रीज कितनी है? एक ट्री में कितनी ट्रीज है? 35 ट्रीज है. तो हमें कितने निकालने पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. 45 रोज में कितने ट्रीज निकालना पड़ेगा? करेक्ट. सो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 45 मल्टीप्लाई 32. तो हमें क्या मिलेगा?
मैंगो मिलेंगे, मैंगो ट्रीज देयर इन अ ग्रो, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज इन द ग्रो। ठीक है, तो सॉल्यूशन 45 rows है and 32 trees है। We are multiplying first 2 multiply 3। इसमें क्या है देखो, 2 डिजिट को 2 डिजिट से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा that is 10, 2 5 जा that is 10 and 1 carry over the 10, then 4 2 जा और 2 4 जा, 2 4 जा 8, 8 plus 1 that is 9। जब हम 2 डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लेते हैं पहले, जब 10 से हम लोग, ये क्या है 10 नंबर है मतलब 3 नंबर है, तो 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम क्या लेंगे, 0 बिलो दी 10, बिलो दी यूनिट, देन मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, तो 5 प्लेस हियर एंड 1 कैरी ओवर दी 100, देन वी आर मल्टीप्लाई 3 बाय 4, मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 3 4 जा 12, 12 plus 1 12 plus 1 13। Next we are adding this to answer, that is 0 plus 0 0, 9 plus 5 9 plus 5 14, 4 place here and 1 carry over the 100, correct? So 3 plus 1 4 and 1, so our answer is 1440, therefore 440 mango trees are there in a grove. You understand how to solve, and this is our last answer in this lecture. If one book costs 80 rupees, how much do 25 each book cost? एक बुक की, वन बुक की कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज है। एक बुक कितनी की है, 80 रुपीज की है, तो 25 बुक की प्राइस कितनी होगी, 25 बुक की प्राइस कितनी होगी, हमें क्या करेंगे, 80 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, सॉल्यूशन इज 80 multiply 25, we are first multiply 5 multiply 0, 5 multiply 0 that is 0, then 5 multiply 8, then 5 multiply 8 that is 8 5 ja 40, 8 5 ja 40। नेक्स्ट क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे, क्योंकि हम 10 से यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 किधर प्लेस करेंगे, यूनिट के नीचे प्लेस करेंगे, देन 2 multiply 0, then 2 multiply 0 that is 0 and 8 multiply 2, next 8 multiply 2, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, we add this number, 0 plus 0 0, next 0 plus 0 0, 6 plus 4 6 plus 4 10, so 1 carry over the 1000, so 1 plus 1 1 plus 1 that is 2, so our answer is 2000, so the book cost is 2000 rupees, book cost is 2000 rupees. You are like this lecture, you are subscribe our channel and share to your friend, subscribe करना मत भूलिए, thank you very much.